Morning, sir. Good morning, everybody. Good morning, sir. How many have not joined? What class we have today in the morning? Sir, botany. Botany you have. Okay. And now we have zoology. Sorry, physics. Okay. And last class, okay. What was the last problem we have solved? Can you please read the problem? The potential energy. Okay, okay. That was the last problem. Okay. We have learned some system of units we have learned, okay, like CGS system, MKS system, FPS system, and SI system. These are the system of units we have learned. Yeah, CGS system, MKS system, FPS system, SI system. In all these systems, length, mass, and time were considered as fundamental quantities, right? So we have learned few systems like CGS system, MKS system, FPS system. And in all the system, length, mass, and time, they were considered as fundamental quantities. Now, sometimes what happens? Sometimes what happens? People may change fundamental quantities in the system. They may have a new system where fundamental quantities will be changed. Before I start, two quantities I have written in the book, G and H. G is gravitational constant and H is Planck's constant. You quickly write their dimensions. Okay, G is gravitational constant and H is Planck's constant. You quickly write their dimensions. G is m-1. L keep t-2. You just write in the chat box. In chat box, you send it directly to me. Okay. Answer you write, all of you write the dimensions. MLT, you don't need to write, just write their power. MLT, I understand. Sequence, MLT, okay. Sequence, you just write their power. I'll understand. In chat box, all of you. The G and H
Okay. Okay, some more you please write. Okay. Um, okay. Well, most of you, almost all of you have written correctly. Almost all of you. Okay. Almost all of you have written correctly. And what you have written, almost all of you have written correctly. And what you have written? Almost all of you have written it correctly. Okay. Now, as I was telling you that sometimes, अच्छा आप लोग में तो बंगाली मीडियम का भी है कितना स्टूडेंट्स वर्नाकुलर मीडियम से है जो एसामीज हो बंगाली हो या हिंदी मीडियम का है आप लोग हाथ ऊपर कीजिए जो इंग्लिश मीडियम का नहीं है आप लोग हाथ ऊपर कीजिए आप लोग में से कौन कौन वर्नाकुलर मीडियम का है इंग्लिश मीडियम का नहीं है लाइक हिंदी बंगाली एसामीज यू प्लीज रेज योर हैंड आपका यहाँ हैंड रेज करने का एक ऑप्शन है रिएक्शंस पे जाने से एक ऑप्शन आएगा रेज हैंड खोल के उसमें लगाइए अच्छा इट्स ग्रेट ऑल ऑफ यू आर फ्रॉम इंग्लिश मीडियम ओके okay since all of you are from English medium I think I should communicate in English it will be better for me it will be better for you Okay, sir. English. Okay, sir. if someone is from Bengali medium or Assamese medium or Hindi medium, you have not raised your hand, and if you find difficulty, you just ask me. Okay? Now, what happens sometimes? People change the base quantity, fundamental quantity in a new system. In a new system, they change the base quantities, they change the fundamental quantity. As a fundamental quantity, we have length, mass, time, all this thing, and people change it to some other quantities, the fundamental quantity. So if they change the fundamental quantity, how to solve the problem? Let's solve one. Let's solve one problem. एक problem हम लोग solve. ये problem आप लोग copy कीजिए. You please copy this problem.
suppose in a new system, gravitational constant G, Planck's constant A. आपका साउंड नहीं आ रहा है सर। आप लोग क्वेश्चंस लिखिए यार। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में हमारे पास एक सिस्टम है जिसमें लेंथ, मास और टाइम ये सब फंडामेंटल क्वांटिटीज नहीं रहा। फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या रहा? जी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट एंड स्पीड ऑफ लाइट, दे आर द फंडामेंटल क्वांटिटीज। और इस सिस्टम पे मास का डायमेंशंस क्या होगा वो हमको निकालना है। अगर क्वेश्चन समझ में आया तो आप एक काम कीजिए, वाई लिखिए सब। अगर क्वेश्चन समझ में आया तो वाई लिखिए। ठीक है, ओके ओके। हाँ, वाई लिखने में कितना टाइम लगाते हैं आप लोग? फटाफट लिखिए। क्वेश्चन समझ में आ गया, वाई लिखिए, नहीं उसे नो लिखिए, एम लिखिए। ठीक है, तो हम सॉल्व करेंगे अभी। I hope all of you have copied the question. I hope all of you have copied the question. Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. अभी हम सॉल्व करेंगे, हाँ? देखिए, एक सिस्टम है हमारे पास। We have a system where G, capital G, is fundamental. फंडामेंटल क्वांटिटीज चेंज हो गया। इस सिस्टम पे लेंथ, मास एंड टाइम दे आर नॉट फंडामेंटल। फंडामेंटल है G, H एंड C। तो उस सिस्टम पे मास का डायमेंशन क्या होगा वो हमको निकालना है। ओके, तो हम ऐसा लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे हम पे, we'll write like this. Let mass equals to G power X, H power Y, C power Z. Okay. Now all we need is to find X, Y and Z. X, Y and Z कितना होगा उसका वैल्यू निकल के हम वहां पुट कर देंगे, हो जाएगा। All we need is to find X, Y, Z. Now what we will do after writing this, we'll write the dimensions of each quantity in SI system. SI system पे सारे क्या quantities का dimensions हम लिखेंगे, हाँ, SI system. So mass का dimensions लिखेंगे, G का dimension लिखेंगे, H का और C का लिख लीजिए आप लोग। Mass का M, L0, T0. Dimensions of G is M power minus 1, L cube, T power minus 2, power X. Dimensions of Planck's constant is M, L2, T minus 1, power Y, and speed of light is LT minus 1, power Z. Then you simplify. M power minus X, M power Y. M power minus X plus Y. L power 3X, L power 2Y, L power Z. So L power minus Z.
And we know left hand side and right hand side dimension should be same. लेफ्ट हैंड साइड का जो डायमेंशंस होगा राइट हैंड साइड का जो डायमेंशन होगा सेम होगा बराबर होगा. So if we compare left hand side and right hand side, what we get? Minus x plus y should be 1. This quantity should be 0. This quantity also should be 0. So now we have 3 equations, 3 unknowns. हमारे पास 3 equation है और 3 unknowns है. ठीक है? We have 3 equations, 3 unknowns. 3 equation, 3 unknown है. And in physics, a shortcut you should remember. Easy one. Whenever you have 3 equations and 3 unknowns, now whenever you have in any problem, quickly you add all of them. You may get one of them. Just quickly you add, and you may get one of them. So just add 2, 3, and 4. You will get one of them. Okay. Whenever you have 3 equations and 3 unknowns in physics, it is more likely that you add all the 3 equations, one of the unknowns you will get. Just add all the 3 equations, one unknown you get. ऐड कीजिए फटाफट, ये तीनों इक्वेशन ऐड कीजिए, एक अननोन मिल जाएगा आप लोग को. सर x is equal to minus y. चेक कीजिए फिर से एक बार चेक कीजिए. ये देखिए माइनस एक्स प्लस 3x माइनस 2x 0 हो गया. y प्लस 2y 3y माइनस y 2y हो गया. z माइनस z 0. So 2y equals to 1. Y is equal to half. Y equals to half. Put it in equation 1, you will get x. You put in equation 1, you will get x. Okay, you put in equation 1, you will get x. Minus half you got. You check whether you got minus half or not. Okay, Yes, you put in minus equation minus half. Okay, and then x equals to minus half, y equals to half. You put either in 3 or in 4. Sorry, in 2. This one. You put x equals to minus half. You put x equals to minus half. Y equals to half. Either in equation 3 or 4, you will get z. Anyone as you wish. Z equal to half. Half, sir. Z equal to. Y equals to half. You put either in equation 3 or in equation 4. Either in 3 or 4, you will get z. अब 3 में put करते हैं. If you put in equation 3, if you put in equation 3, minus 3 by 2 plus 1. It's minus 1. Z is 1 by 2. ठीक है, कैलकुलेशंस आप अपने हिसाब से कीजिएगा हमेशा. Always you calculate on your own. So you got x equals to minus half, y equals to half, z equals to half. Put them in equation 1 and you will get.
आप लोग ये क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़िए। ये क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़िए और इसका सॉल्यूशन देखिए कैसा हुआ। You read the question once again. First you read the question once again, then look at the solution. ठीक है, so you try a similar problem, one similar problem you try. आप लोग के सिमिलर प्रॉब्लम ट्राई कीजिए। ये बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये कॉपी कर लीजिए। आप लोग क्वेश्चन कॉपी कीजिए। Suppose in a new system, energy E, velocity V, and time T are taken as fundamental quantities. Find the dimensions of pressure in this system. आंसर आने के बाद आप लोग टाइप कीजिएगा, कैलकुलेट करने के बाद आंसर टाइप कीजिएगा। टेक्निक सेम टेक्निक यूज कीजिए।
ओके, एक तो आंसर सही आ गया, बाकी आप लोग आंसर दीजिए। टेक्निक सेम है, सेम टेक्निक, आप सेम स्टाइल पे लिखिए। You write in the same style. Okay, okay, so answers, right answers are coming. Right answers are coming. Left. Pressure equals to E bar X, V bar Y, T bar Z. Okay, let pressure equals to E bar X, V bar Y, T bar Z. Then you write the dimensions on both sides. Both sides, you write the dimensions. Okay, you write dimensions on both sides. Then you simplify. M bar X then you compare both sides. आप दोनों साइड कंपेयर कीजिए, दोनों साइड आप कंपेयर कीजिए. If you compare both sides, check whether you get this one or not. X equals to 1. Check whether you got this one or not. X equals to 1, Y equals to -3, Z equals to -3. Check whether you got this 2 or not. X equals to 1, Y equals to -3, Z equals to -3. And then you put them in equation 1, you will get. Okay, most of you got 1 or 2, you are getting T power 0. One student you are getting T power 0, you check. One more student is getting T power 0, you check. All other are getting T power -3, B power -3. So you please check the calculations. You got E power 1, B power -3, T power 0, maybe some mistake you have picked. Okay, 2, 3, and 4. You put in equation 1. 2, 3, and 4. You put in equation 1. E power X, X is 1. V power Y, E power X, so E power 1. V power Y, Y it's -3. T power Z, Z is also -3. So dimensions of pressure is E, V power -3, T power -3. Any questions you want to ask? आप लोग को कुछ पूछना है, कोई क्वेश्चन से आप लोग पूछना चाहते हैं?
ओके, आप लोग को एक डीपीपी मिला है, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम असाइनमेंट के लिए। मैंने शेयर किया था ग्रुप में, आप लोग ने देखा है क्या वो डीपीपी ग्रुप में शेयर किया हुआ है? Yes, sir. अच्छा, उस डीपीपी में कुछ प्रॉब्लम है जो ये टेक्निक से आप लोग को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, मैं बता दूं। First question. सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन नहीं, 3-4 क्वेश्चन से डीपीपी कहाँ गया है। हाँ, ये आप लोग को कुछ क्वेश्चन से, फर्स्ट क्वेश्चन ये सेम टेक्निक है। थर्ड क्वेश्चन का भी टेक्निक सेम होगा। फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स तो अलग है, फोर्थ फिफ्थ का सेम टेक्निक है। सेवेंथ का भी सेम टेक्निक है, नहीं सेवेंथ का तो अलग से टेक्निक है। और ये 9th और 10th, क्वेश्चन नंबर 9 में ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, सेम टेक्निक आप यूज करेंगे, लेकिन ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन आप पहले निकाल लीजिएगा। कूलम्ब्स लॉ यूज करके ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन आप पहले निकाल लीजिए और टेक्निक सेम टेक्निक आप यूज कीजिए, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, 9 और 10 सबका टेक्निक सेम होगा। ओके, और नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट पार्ट में जाने से पहले कन्वर्शन तो आप लोग को पता ही है कैसा कन्वर्ट करते हैं। सपोज मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ आपको, ये ट्राई कीजिए, कन्वर्ट 1 जूल इनटू आर्क। और आंसर फटाफट लिखिए, जिन सबको पता है फिर भी आप एक बार कन्वर्ट कर लीजिए। Convert 1 joule to arc. ओके, ये आप लोग का याद है या आप लोग कैलकुलेट कर रहे हैं? याद रहने से अच्छा ही है, नहीं रहने से आप लोग कैलकुलेट कीजिएगा। और मैं आप सबको यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब कैलकुलेट कर लीजिए, आप सब कैलकुलेट कर लीजिए। इतना जीरोस तो आप मत लिख लीजिए, इतना जीरोस लिखने से तो कंफ्यूजन हो जाएगा। पावर लिखिए, 10 का पावर कितना जीरोस होगा वो लिख लीजिए। इतना ज्यादा जीरो लिखने से कोई भी परेशान हो जाएगा पढ़ते पढ़ते। Convert 1 joule into arc. पहले क्या है, जूल इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। टेक्निक, जिन सबको टेक्निक पता है दैट्स ग्रेट, ये इसका तो वैल्यू सबको याद ही होगा। हाँ, 10 to the power आप एक काम कीजिए, कैसा कन्वर्ट करते हैं ये सीख लीजिए। पहले क्या है कि जूल इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, एनर्जी का डायमेंशन सीखिए। ठीक है, पहले जूल इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, एनर्जी का डायमेंशन। उसके बाद यूनिट लिखिए 1 जूल, उसके बाद यूनिट लिखिए 1 जूल। 1 जूल इक्वल्स टू मास, मास का केजी होगा 1 केजी, लेंथ का मीटर होगा 1 मीटर, डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम को 1 सेकंड, 1 सेकंड। उसके बाद आप कन्वर्ट कीजिए, 1 केजी इज 1000 ग्राम,
1 meter is 100 centimeter. 1 second square. यहाँ 0 कैलकुलेट करें से 1 2 3 और यहाँ 4 0 है, then 100 square is 4 zeros, 4 5 6 7. 10 power 7 RP. अब टेक्निक सीख लीजिए। पहले हम लोग डायमेंशंस लिखेंगे, उसके बाद कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, पहले हम लोग डायमेंशंस लिखेंगे, उसके बाद कन्वर्ट करेंगे। Next one problem you write, one problem. One problem you write. Okay. In a new system, unit of length is 1 kilometer. Unit of mass is 1 ton. And unit of time is 1 hour. How much will be 1 Newton in this system? ये ट्राई कीजिए आप लोग। पहले क्वेश्चन कॉपी कीजिए, उसके बाद ट्राई कीजिए। हाँ, फटाफट आंसर बताइए, कितना आता है? 1 न्यूटन इज हाउ मच इन दिस सिस्टम?
Newton is the unit of force. So dimensions of force लिखे आप लोग. Newton is the unit of force. You write the dimensions of force. Okay. Newton is the unit of force. You write the dimensions of force. So 1 Newton is 1 kg. Okay. 1 Newton is 1 kg, 1 meter by 1 second square. In the new system, Mdesh, let's write in the new system, 1 Mdesh, new system. Unit of mass is 1 ton. 1 ton means 1000 kg. Unit of mass is 1 ton. 1 ton means 1000 kg. Unit of length is 1 kilometer. 1 kilometer again means 1000 meter. One hour is 3600. 1 hour is 3600 seconds. Then T power minus 2. That means square. Okay. 1 kg is 1000. 1 ton is 1000 kg. In this system, new system is 1 ton, 1000 kg. Length is 1 kilometer. 1 kilometer means 1000 meter. Time is 1 hour. 1 hour is 3600 seconds. Square. Time square. Okay. I'm writing here 1 Mdesh. Mdesh is the new one. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 zeros are there. और यहाँ 4 zeros है, cancel हो जाएगा. kg meter per second square is Newton. kg meter per second square is Newton. So 1 Mdesh is 100 by 36 into 36 Newton. 1 Mdesh is 100. You see 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros are here. और यहाँ 4 zeros है. 1, 2, this much. Cross multiply, you will get 1 Newton. Okay. Cross multiply, you will get 1 Newton. चेक आप लोग को इतना आना चाहिए 12.96 36 into 36 is 1296 divided by 100 12.96 Any questions you want to ask? आप लोग को कुछ questions पूछना है? किसी को कोई भी क्वेश्चन पूछना है?
Okay. And next part is the first part is dimensions, units and dimensions of this chapter, units and measurement chapter. First part is units and dimensions, and next part will be measurement. And how to measure, everybody knows how to measure. So if you want to measure its length, you need a scale. And if you're given a scale, you can measure. If you want to measure its mass, you need a balance, common balance. You put it there, you can measure the mass. So how to measure, every one of you know. How to measure different quantities. Now, one question I'd like to ask. Next part of this chapter is measurement. One scale I have drawn in the board, millimeter scale. Okay, one scale I have drawn in the board, it is millimeter scale. The smallest division is 1 millimeter. What is the smallest division of a scale called? जी बताइए, फटाफट बताइए. You can unmute your mic and tell. List count. List count. Least count. Okay. Least count. Okay. Least count. The smallest division of a scale is from least count. आपको definition देख लीजिए. ठीक है. Smallest division of a scale is called least count. ठीक है. Smallest division of a scale is called least count. इसका मतलब क्या है कि सपोज ये स्केल का least count है 1 millimeter. You cannot measure anything that is less than 1 millimeter. Okay, you understood? Suppose the least count of this scale is 1 millimeter. Least count मतलब है सबसे छोटा division. और सबसे छोटा division 1 millimeter, उनसे हम least count 1 millimeter कहेंगे. Least count is 1 millimeter का मतलब है हम कोई भी length 1 millimeter से नीचे measure नहीं कर पाएंगे. इतना तक आप सबको समझ में आ गया होगा, मैं ये उम्मीद रखता हूँ. मेरा क्वेश्चन ये है, सपोज एक रॉड है, ये रॉड, इसका लेंथ हम मेजर करना है ये स्केल से. तो हम कैसे मेजर करेंगे? that one end of this rod will put at the zero of the scale and look at the reading of the other end. ठीक है. सपोज ये रॉड और ये स्केल आप लोग को दिया गया है, तो इसका लेंथ कितना होगा आप मुझे बताना नहीं है, आप चैट कीजिए, चैट में आंसर कीजिए. What is the length of this rod? You don't tell, you just write in the chat box quickly. What is the length of this rod? Quickly you write. जो आप लोग को समझता है, आप लोग को लगता है कि सही लेंथ है, वो लिखिए. फटाफट लिख के. एमएम लिखने का जरूरत नहीं है, मुझे पता है एमएम है, आप लोग आंसर लिखिए. इतना है, हम आप लोग फटाफट लिखिए, गलत हो या सही हो आप लिखिए,
लिखते जाइए। ओके, ठीक है, ठीक है। स्टॉप, नाउ लिसन। आप लोग ने लिखा 6.5, मैक्सिमम स्टूडेंट ने लिखा 6.5 और कुछ स्टूडेंट ने 6.4 लिखा। मैक्सिमम हैव रिटन 6.5, मैक्सिमम हैव रिटन 6.5 और कुछ स्टूडेंट ने 6.4 भी लिखा है। 6 में हम बाद में आएंगे। देखिए, मिनिमम लेंथ यू कैन मेजर इज 1 मिलीमीटर, ये मैंने कहा, आप लोग ने सुना। मिनिमम लेंथ इज 1 मिलीमीटर, ये मैंने कहा था, आप लोग ने सुना। मिनिमम लेंथ दैट यू कैन मेजर, तो आप लोग ने 0.5 कैसा मेजर किया या 0.4 कैसा मेजर किया? मैंने 6 बोला। मेरा बात समझ में आया आप लोगों को कि आप लोग ने बोला कि मिनिमम डिवीजन जो है लीस्ट काउंट जिसका 1 मिलीमीटर है, तो आप लोग 6.5, तो ये 0.5 आप लोग ने कैसा मेजर किया? सर 6 है, 6। आंसर 6। आंसर 6 है। अगर मैं 7 बोलूं, if I tell 7, डिस्काउंट देना। ये होगा सर। अगर मैं 7 बोलता हूँ, इसका लेंथ क्या बोलेंगे आप लोग? अगर इसका लेंथ मैं 7 बोलता हूँ तो आप लोग क्या बोलेंगे? 6 ही होगा सर। हाँ, ठीक होगा कि गलत होगा? अगर मैं 7 बोलता हूँ उसका लेंथ सही होगा कि गलत होगा? गलत होगा सर, गलत होगा। क्यों गलत होगा? Because 6 is nearer. नहीं, वो तो आप मेजर नहीं कर रहे हैं। अगर आप बोलते हैं कि इट्स नियर और आप मेजर नहीं किया, ठीक है? लिस्ट काउंट है सर। एस्टिमेट किया, एस्टिमेशन, उसको एस्टिमेशन कहते हैं, मेजरमेंट। अगर हम अप्रोक्सीमेटली, नियर ये सब टर्म यूज करते हैं तो वो मेजरमेंट नहीं होगा, वो हमारे लिए एस्टिमेशन होगा। हम एस्टिमेट कर रहे हैं, हम गैस कर रहे हैं कि इसका इतना हो सकता है, ठीक है? तो when we tell measurement, we should tell the actual one. Now you see, actually 1 millimeter is a very small division. आप लोग ने रियल लाइफ में 1 मिलीमीटर डिवीजन देखा? 1 मिलीमीटर रियल लाइफ में बहुत छोटा डिवीजन, बहुत छोटा डिवीजन है। And if I give this scale, अगर मैं ये स्केल और ये रॉड आप सबको दे देते हैं, real life, if I give you this scale and this rod to all of you in real life, 50% of you will tell it is 6 millimeter and the other 50% will tell it is 7 millimeter. 50% will tell it is 6 and the other 50% will tell it is 7 millimeter, because in between you don't have any division. You cannot write 6.4, you cannot write 6.5, you cannot write 6.6. In between you don't have any division to measure. 6 और 7 के बीच में मेजर करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। तो अगर हम या तो 6 बोलेंगे या 7, ठीक है? We'll tell either 6 millimeter or 7 millimeter. Now with this idea, if I give this rod and this scale to all of you, 50% will tell it is 7 millimeter, the other 50% will tell it is 6 millimeter. Which one is correct? Sir, 6 because least count. Why 6? Both are correct. Both the correct, sir. Right, both are correct. If you tell 6 millimeter, it is correct. If you tell 7 millimeter, that is also correct. Both are correct. दोनों correct है, ठीक है? आप 6 millimeter बोलिए correct होगा, 7 millimeter भी correct होगा। लेकिन अगर हम 6 मिलीमीटर बोलते हैं तो क्या हमने एक्चुअल लेंथ बोला? No, sir. देखिए, अगर हमने 6 मिलीमीटर बोला तो मैंने इतना लेंथ कम बोल दिया। We have told something less.
If we tell 7 millimeter, then also we told something more. We have not told the actual length. Both are correct. 6 millimeter is correct, 7 millimeter is also correct. But if we tell 6 millimeter, we are not telling the actual length. If we are telling 7 millimeter, then also we are not telling the actual length. हमने actual length नहीं बताया. Either 6 millimeter या 7 millimeter. ठीक है, both are correct. लेकिन दोनों actual length नहीं है. तो हम जब भी किसी भी quantity को measure करते हैं, whenever we measure any quantity, we measure slightly more or slightly less. Slightly more or slightly less. हम हमेशा ऐसे ही measure करते हैं. ठीक है? Whenever we measure any quantity, we measure slightly more or slightly less. That slight more or less that we put in measurement is called error in measurement. Errors in measurement. This is our topic. Errors in measurement. अच्छा, यहाँ जो एरर आ रहा है इसमें, ये हमारे लिए नहीं आ रहा है. This is not because of us. The error we have here, यहाँ जो error है, वो error because of the scale है, because of the smallest division of the scale. It is not because of us. So the error that is because of the smallest division of the scale is called absolute error. और वो हम डेल्टा एक्स से डिनोट करेंगे. ठीक है? The error that is because of the smallest division of the scale is called absolute error. और absolute error क्या करेंगे? हम डेल्टा एक्स से डिनोट करेंगे. याद रखिएगा, it is because of the smallest division, means because of the least count. Because of the least count of the instrument. So absolute error हम denote करेंगे delta x से, and it is because of the least count of the instrument. Okay. This absolute error is also called least count error, also called least count error. और ये हमारे वजह से नहीं है. This is not because of us. This is because of the scale. Scale के वजह से है. ठीक है? Any problem till now? यहाँ तक कोई problem है? अगर प्रॉब्लम है तो आप y लिखिए. अगर प्रॉब्लम है तो y लिखिए. नहीं है तो कुछ भी लिखने का जरूरत नहीं है. Okay. So this error is not because of us. It is because of the instrument. But you see, when we measure, some of us are measuring 6 millimeter, some of us are measuring 6 millimeter, some of us are measuring 7 millimeter. तो हमारे लिए भी कुछ error आना चाहिए. There should be some error because of us. The error that comes because of us is called relative error or fractional error. ठीक है? Relative error और fractional error, ये error because of us, that is because of us. How it is because of us? You see,
The definition is ये definition है absolute error by measured value, relative error और fractional error. Definition है absolute error by measured value. तो यहाँ देखिए ये एरर जो है वो हमारे वजह से हो सकता है, क्योंकि अगर आपने 6 मेजर किया तो आपके लिए कुछ एरर होगा, अगर आपने 7 मेजर किया तो डिफरेंट एरर हो जाएगा. You understood? Absolute error is not because of us, it is because of the scale, because of the instrument. लेकिन हम जब रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर कहेंगे, that is because of us. अगर आपने 6 मेजर किया तो आपके लिए कुछ एरर आएंगे, अगर आपने 7 मेजर किया तो आपके लिए दूसरा कुछ एरर आ जाएगा. So that is because of us. हम मैथमेटिकली ऐसा लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे मैथमेटिकली. ठीक है. और अगर हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते तो हमको परसेंटेज एरर मिल जाएगा. इफ वी मल्टीप्लाई इट बाय 100 we'll get परसेंटेज एरर. एक बार चेक कर लीजिए. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन इन दिस 3 1 2 and 3, if you have any question you check please. Okay, now what you will remember that absolute error will not tell us whether a measurement is more accurate or less accurate. Okay, absolute error will not tell us whether a measurement is more accurate or less accurate, because anything you measure with as a millimeter scale, the absolute error will always be 1 millimeter. A measurement will be more accurate if fractional error and percentage error are less. You note this point. You note this point. आप लोग ये point note कीजिए. आप लोग ये point note कीजिए. Absolute error do not give us anything about accuracy. Point number 1 आप लोग note कीजिए. आप लोग note कीजिए. Absolute error do not give us anything about accuracy. ठीक है. Or point number 2. Absolute error do not Give us accuracy. Absolute error do not give us accuracy. Or point number 2. Point number 2. A measurement will be more accurate if relative error and percentage error are less. A measurement will be more accurate if relative error and percentage error are less. Okay. Now you solve one problem. One problem you write. One problem. एक problem आप लोग लिखिए. The time of 25 oscillation. The time of 25 oscillations
of a pendulum the time of 25 oscillation of a pendulum is 20 seconds. The time of 25 oscillation of a pendulum is 20 seconds. Full stop. If the least count of stopwatch, is 0.5 second, then calculate. If the least count of stopwatch is 0.5 second, then calculate absolute error, fractional error, and percentage error. Sir, then calculate. Absolute error, fractional error, and percentage error. ये मैंने चैट में ये आंसर दे दिया, आप लोग क्वेश्चन दे दिया. The time of 25 oscillation of a pendulum is 20 seconds. चैट में क्वेश्चन लिख दिया, आप लोग वहां से देख लीजिए, चैट से क्वेश्चन कॉपी कर लीजिए. Least count is 0.5 second. Calculate absolute error, fractional error, and percentage error. चैट में क्वेश्चन है, आप लोग कॉपी कर लीजिए वहां से. $25 oscillation. OSCN मतलब oscillation. Time of 25 oscillation of a pendulum is 20 seconds. Least count of stopwatch is 0.5 second. Calculate absolute error, fractional error, and percentage error. हाँ, आप लोग आंसर लिखिए, फटाफट आंसर लिखिए. फटाफट आंसर लिखिए.
मिला आप लोग को? मिला आप लोग को? Have you got? I think most of you. You see, least count is 0.5 second. इसका मतलब least count is 0.5 second. इसका मतलब absolute error is 0.5 second. ठीक है? Least count जो होगा वो absolute error हो जाएगा. Very simple. So least count is 0.5 second. इसका मतलब absolute error 5 second. 0.5 second. Fractional error क्या है? Is absolute error measured value. Fractional error is absolute error by measured value. Absolute error is 0.5 second. Measured value is 20 second. Remember 0.5 by 20 second. Measured value is 20 second. Absolute error is 0.5 second. Measured value is 20 second. 25 oscillation जो है वो हमने measure नहीं सिर्फ count ही किया. हम मेजर नहीं करने से एरर नहीं आएगा, काउंट करने से एरर नहीं आएगा. हाँ, वो तो सिर्फ हमने काउंट किया 25 ऑसिलेशन. सो 25 ऑसिलेशन में कोई एरर नहीं है. एरर है 20 सेकंड मेजरमेंट. सो मेजर्ड वैल्यू इज 20 सेकंड. ठीक है? सो 0.5 by 20 1 by 40 होगा. 1 by 40. 0.5 by 20 is 1 by 40. ठीक है? 0.5 by 20 is 1 by 40. और परसेंटेज एरर में क्या होगा? 1 by 40 into 100. 2.5. चेक कीजिए आप लोग सबको मिला है क्या ये? If you have understood all of you check. If you have understood or you have some difficulties. Like 2.5%, 25%, 2.5. 100 by 40 is 2.5. Fractional error होगा 1 by 40, 0.5 by 20. If you have any problem, you can ask. आप लोग को कोई problem है तो आप लोग पूछ सकते हैं. Sir, explain that absolute error also. Absolute हाँ जी, error. क्या बोला आपने? Explain that absolute error. एब्सोल्यूट एरर देखिए आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल मत होइए, आराम से रहिए. जो भी लिस्ट काउंट होगा वो एब्सोल्यूट एरर हो जाएगा. कुछ भी नहीं करना है. ठीक है? समझ रहे हैं आपको? हाँ, आपको समझना नहीं है, इससे ज्यादा आप मत समझिए. यही से आप याद रखिएगा, जो भी लिस्ट काउंट होगा वही एब्सोल्यूट एरर हो जाएगा. उससे ज्यादा आप कुछ भी टेंशन मत लीजिए. ठीक है? एब्सोल्यूट एरर विल बी इक्वल्स टू लिस्ट काउंट. कहीं पे भी कुछ भी हो, लिस्ट काउंट जो दिया है वही एब्सोल्यूट एरर. आपको क्यों इतना टेंशन लेना है? अगर आपको कुछ चीज समझ में नहीं आ रहा है, वह आप समझने का कोशिश भी मत कीजिए. आप ऐसा, मैं जैसा कह रहा हूँ आप वैसा कीजिए. आपका समझने का जरूरत भी नहीं. ठीक है? एब्सोल्यूट एरर क्या होगा? जो भी लिस्ट काउंट दिया जाएगा वही एब्सोल्यूट एरर. आराम से कीजिए, खूब. उसके बाद क्या है? फ्रैक्शनल एरर. आप एब्सोल्यूट एरर को मेजर्ड वैल्यू से डिवाइड कर दीजिए. कुछ भी हो मेजर्ड वैल्यू डिवाइड कर दीजिए, हो जाएगा. ठीक है? और फ्रैक्शनल एरर को 100 से मल्टीप्लाई कीजिए. परसेंटेज एरर. वेरी सिंपल, वेरी सिंपल. एक और आप लोग ट्राई कीजिए. और आप लोग लिखिए, लेंथ ऑफ ए रॉड इज 20.03 सेंटीमीटर. लेंथ ऑफ ए रॉड इज 20.03 सेंटीमीटर. Estimate the percentage error.
ठीक है, length of a rod is 0. Length of a rod is 0. 20. Length of a rod is 20 point. ये मैं भेज रहा हूँ आपको chat में. Length of a rod is 20.03 centimeter. Estimate the percentage error. Length of a rod is 20. ये chat में मैंने दे दिया question. आप लोग वहां से कॉपी कर लीजिए. Length of a rod is 20.03 centimeter. Estimate the percentage error. ठीक है, length of a rod is 20.03 centimeter. Estimate the percentage error. अब ये देखिए, ये मेजरमेंट देख के आपको क्या लगता है लीस्ट काउंट कितना हो सकता है? 0.01. 0.01. ठीक है, सबको ये है. Every one of you have understood. By looking at the measurement, simply by looking at the measurement, you can guess the least count is 0.01. The smallest division is 0.01. आप guess कर सकते हैं. ठीक है? By looking at the measurement, you can guess that the smallest division is 0.01. क्योंकि 20.01, 20.02, 20.03 ऐसा हो सकता है. So the smallest division is 0.01. और percentage error के लिए आप ये formula use कीजिए. Percentage error के लिए ये formula use कीजिए, delta x by x into 100%. ठीक है, percentage error के लिए ये formula use कीजिए, delta x by x into 100%. आपको आ जाएगा. Delta x is 0.01 by x is 20.03 into 100%. Okay. अच्छा, कैलकुलेशन में देखिए 0.03 is very small compared to 20. इग्नोर कर दीजिए. 0.03 is very small compared to 20. इग्नोर कर दीजिए. मैं यहाँ लिख रहा हूँ 0.03. ठीक है, percentage error is delta x by x into 100%. 0.01 delta x is 0.01 by x is 20.03 into 100%. 0.03 is very small. Ignore. Just ignore. 0.03 is very small. Ignore. अगर आप ये इग्नोर करते हैं तो it is
0.05%. Okay. I think we will stop here today. Or evening 5 to 6, I think we have a doubt clearing session. If you have any doubts, you can join. Otherwise, you may not join. It's not compulsory, it's optional. If you have any doubts, you can join them. Okay, from 5 to 6. So we'll stop here today. Thank you so much. Thank you, sir.